माय डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद इमरान हेयर फ्रॉम लर्निंग विद अर्निंग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपको वेलकम किया जाता है जी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के एक्सक्लूसिव लाइव सेशन में, जहां पर आपको मिस आयशा कुरैशी लाइव ऑनलाइन सिखाएंगी, पढ़ाएंगी, समझाएंगी कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को मजीद अच्छा कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वोकैबुलरी को मजीद इंपावर कर सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप डीलिंग कर सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और इस स्पीड से करवाऊंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप लोग स्टार्ट से आ रहे हैं हमारे पास और बहुत दफा ये इंट्रोडक्शन हमारा देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन मुझे एक दफा तो आपको जरा रिवाइज करना है। 374 स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम किया जाता है लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग 2016 से अब तक पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में मल्टीपल किस्म के कोर्सेज, मल्टीपल किस्म के मेंटोर्स, मल्टीपल किस्म की ट्रेनिंग्स को लॉन्च कर चुके हैं, हम ऑफर कर चुके हैं। आपके सामने बैनर्स ओपन है, हमारे डिफरेंट किस्म के मेंटोर्स हैं, कोर्सेज हैं इसमें, ईच एंड एवरीथिंग। कोई बता सकता है इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव मौजूद हैं जूम पर? इस वक्त 376 बच्चे लाइव इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो ये हमें एजाज हासिल है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सेशन लाइव ऑनलाइन हम ही कंडक्ट कर रहे हैं। और ये आज से नहीं, पिछले 8 साल से, 2016 से ये 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स का सेशन यहाँ मौजूद है। 200 से ज्यादा बच्चे लाइव अटेंड कर चुके हैं जूम पर क्लासेस। 300 से ज्यादा बच्चे लाइव अटेंड कर चुके हैं। 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस में बैठ चुके हैं। 500 से ज्यादा स्टूडेंट लाइव क्लासेस में बैठ चुके हैं। और पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में हम लोग डिफरेंट किस्म के डिजिटल एक्टिविटीज, डिजिटल स्किल्स को प्रमोट करने के लिए कंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें ऑल पाकिस्तान वेमेन फेडरेशन कराची में हम सेशन कर चुके हैं, फ्री लांसिंग एजुकेशन एक्सपो मुल्तान में कर चुके हैं, उसके साथ साथ डिजिटल स्किल्स का एक सेमिनार फैसलाबाद में कर चुके हैं, देन पाकिस्तान यूथ डिजिटल कॉन्फ्रेंस लाहौर एंड मुल्तान एंड कराची में कंडक्ट कर चुके हैं 2017 के अंदर। उसके साथ साथ हम रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हशाम सरवर साहब का इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, कंडक्ट कर चुके हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। देन तब्दीली तालीम से के नाम से हमने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया जो कि पीसी लाहौर में कंडक्ट कर चुके हैं। साकिब बदर साहब इनेबलर्स की कोलैबोरेशन के साथ, इनेबलर के साथ मिलकर हमने अमेजोन का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ, पढ़ाया हुआ है। देन आप देख सकते हैं जमात अहले हदीस के साथ हम बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर। देन एक्सट्रीम कॉमर्स सनी अली के साथ हम अमेजोन के टॉपिक के ऊपर पाकिस्तान में मल्टीपल किस्म की एक्टिविटीज कर चुके हैं। उसके साथ साथ पीएनवाई ट्रेनिंग लाहौर का बहुत मशहूर ट्रेनिंग इदारा है, इनके साथ मिलकर हमने बच्चों अब काम करने से मुराद यहाँ पर क्या है, मैं हर दफा एक वर्ड यूज करता हूँ, काम कर चुके हैं। काम से मुराद हम डिजिटल स्किल्स पढ़ा चुके हैं, हम डिजिटल स्किल्स को प्रमोट कर चुके हैं, हम लोगों को एजुकेशन दे चुके हैं। उसके साथ साथ स्कैरी एमी पीआई टीवी लाहौर में हम बहुत काम कर चुके हैं। देन मैं खुद बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर जाके प्रेजेंट कर चुका हूँ, जिसमें महकती मॉर्निंग शो, जिसमें कोहिनूर, जिसमें लाइव स्किल्स टीवी, जिसमें ए टीवी एंड FM 103 इंक्लूड है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे इदारों ने हमें पब्लिश किया है, हमें शाया किया, हमारे खदमात को सराहा है, जिसमें मैशेबल, प्रो पाकिस्तानी, टेक न्यूज, इन्होंने हमें अचीव किया है जी। अब इसमें LW की बुक्स आ चुकी हैं मार्केट में, डिजिटल मार्केटिंग की भी है और सेल्स एंड मार्केटिंग की भी, जो कि खुद मैं लिख चुका हूँ। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 21 से ज्यादा कोर्सेज, 600 से ज्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे मार्केट में आ चुकी हैं DVD की सूरत में एंड USB की सूरत में। देन पाकिस्तान के अंदर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने लर्निंग विद अर्निंग को बेस्ट एजुकेशन स्टार्टअप का अवार्ड दिया है, हम विन कर चुके हैं और ये हम सरकारी फेसबुक के पेज पर भी लग चुके हैं, आप हमें जाके सर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर वो बच्चे जो आपकी तरह सीखने आते हैं, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, और वो बच्चे जो सीख कर जाते हैं, जो पैसे कमा के जाते हैं, फिर वो वीडियो फीडबैक भी बना रहे हैं, जिसमें से आपके सामने स्क्रीन शॉट्स मौजूद हैं। जजाकल्ला खैर, थैंक यू सो मच आपने अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो ये कह रहे होते हैं कि सर आप ये मार्केटिंग अपनी कब खत्म करेंगे, हमें ये सेशन ज्वाइन करना है, क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो क्या यहाँ पर हम कुछ कोई मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या आपको कुछ बेचा जा रहा है? क्या आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं? ऑल ऑफ यू प्लीज, नहीं ना? तो प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। पोर्टफोलियो आपको दिखाया जा रहा है, आपको दिखाने का मकसद एक है कि आप जहां पर आए हैं वो इदारा न्यू नहीं है, हम एक अरसे से काम कर रहे हैं, 90,000 बच्चा मैं खुद पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? तो आपको बताने का मकसद सिर्फ चीजों को दिखाना है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।
जज़ाकल्लाह खैर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, शुक्रिया आपका। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे आपके व्हाट्सएप के ग्रुप का नाम जानना है, मुझे उस इंस्टीट्यूट का नाम जानना है जहां से आप लाइव प्रेजेंट हैं। और ये बात मैं हर बैच में, हर लेक्चर में रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको लेक्चर नंबर 2 इंग्लिश स्पोकन में बैठना है, जो कि परसों 2 मार्च रात 9:30 बजे होने जा रहा है, तो वो उस क्लास का लिंक हम ऐसे व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं भेजेंगे। हमने वो लिंक आपको प्राइवेट भेजना है व्हाट्सएप पर। अब हमें नहीं मालूम ये क्लास कितने स्टूडेंट्स लाइव अटेंड कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले जाके देखिए कि वो कौन सा फेसबुक पेज है या वो कौन सा व्हाट्सएप का ग्रुप है जो आपने ज्वाइन किया हुआ है, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि आप हमारे वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से आए हैं। मैडम जोर, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज मुझे असिस्ट कीजिएगा और देखिएगा कि वो बच्चे जो चैट में एक्टिव नहीं है, वो बच्चे जो चैट में प्रेजेंट नहीं है, आप उनको इस क्लास से रिमूव कर सकती हैं। स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं जूम की चैट ऑफ कर रहा हूँ। जूम की चैट मैंने अब ऑफ कर दी है। अब आपने हाजिरी लगानी है, अब आपने अटेंडेंस लगानी है, अब आपने यस प्रेजेंट लिखना है। कहाँ लिखना है? जिन्होंने आपको आज की क्लास का लिंक दिया है। अब किसने आज की क्लास का लिंक दिया है, जाइए व्हाट्सएप का ग्रुप देखिए, वहां आपको लिंक मिलेगा। अगर वहां नहीं मिल रहा तो प्राइवेट किसी ने आपको आज की क्लास का लिंक दिया होगा। वो लोग जो पिछले 2 या 3 दिन से आपको डील कर रहे हैं, आज की क्लास के बारे में बता रहे हैं, आज की क्लास में जिन्होंने आपको बिठाया है, प्लीज उनको हाजिरी लगा दीजिए। हाजिरी लगाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है लेक्चर नंबर 2 का लिंक हम आपको दे सकें, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दे सकें। हमने एक अलग से बैच 62 का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आपको हम ऐड कर सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, अपनी हाजिरी लगाइए। और हाजिरी कहाँ लगानी है, अटेंडेंस कहाँ लगानी है? वहां पर जिन्होंने आपको आज की क्लास का लिंक दिया है व्हाट्सएप पर। मैंने जूम की चैट ओपन कर दी है, आप सब मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू टाइप डन अगर अटेंडेंस लगा दी है, जूम की चैट ओपन है, मुझे डन लिख सकते हैं। अब मैं आपका वक्त मजीद नहीं लूंगा, जज़ाकल्लाह खैर। मिस आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। मिस आयशा जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से? आप अपना वेबकैम एंड अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। Okay. Assalamu alaikum, batch 62. I hope that you all are doing great by the blessing of Almighty. This is your mentor, Aisha Qureshi from LWE. I'm majored in English Literature and Linguistics, and I am certified GMAT and IELTS instructor currently. I'm working as fluency coach. So that was my little introduction to you. So now, student, here we are today to know where we would stand after taking this course. Let me tell you, students, that whenever we are doing anything in our lives, there is always some reason, aims, and objectives. So if you are joining spoken English course, there would be so many reasons behind it. Maybe you would be joining it for enhancing your speaking skills. कुछ ऐसे students होंगे जिनकी जो है वो communication जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, they can listen, उनको समझ आता है, but उनको English समझ आती है, but they cannot conversate in it. Some of you want to work on your pronunciation, on your accent, on your vocabulary. So student, every language has 4 modules. हर language के 4 modules होते हैं: speaking, listening, reading, and writing. Without reading, you wouldn't be able to polish your writing skills. In the same way, without listening, you wouldn't be able to polish your speaking skills. So now we have different categories in our students. Some of you may be from school, some of you are from colleges, some of you are from university, and some of you have done their education and now they are looking for the jobs. सबके पर्पस डिफरेंट होते हैं, सबके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है. So if you're looking for the job and you want to work on internet to find the job, maybe you want to sell your skills on internet, you are working on different platforms like Fiverr, Upwork, Freelancer, etc. जी, मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर लीजिएगा, हमने स्क्रीनशॉट लेने हैं। Okay, are you talking to me? जी मैडम, आपसे बात। Okay. जी स्टूडेंट्स, मैं वंस अगेन आपको कह रहा हूँ, अगर आपने हाजिरी नहीं लगाई, अटेंडेंस नहीं लगाई, तो वो जरूर लगाइए। और व्हाट्सएप के एडमिन्स को, जिन्होंने आपको व्हाट्सएप पर आज की क्लास का लिंक दिया है, उनको एक दफा यस प्रेजेंट जरूर लिख दीजिए, ताकि हम आपको अगली क्लास का लिंक, इस क्लास की रिकॉर्डिंग और आपको प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दे सकें। जी मिस, आपसे 3 शेयर कर Let me share it.
जी Okay, are you able to see that? जी it's shared. Okay, students, let me just share the introduction. Okay, students. All right, so I was telling you that in world we are having more than 7,000 plus languages, and English is the topmost spoken language of the world. So it is not possible to avoid it. Okay, and everyone should know this language because life के किसी ना किसी phase पर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है. मैडम It is आपकी the era स्क्रीन of स्टक है, लाइक स्टक है, शेयर नहीं हुई अभी तक ना. आप दोबारा कीजिएगा, ऑफ करके ऑन कीजिएगा. Okay. आप वेबकैम बेशक ऑफ कर सकती हैं अपना. शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम हो. Are you able to see now? जी मैडम, नाउ इट्स शेयर. Alrighty. So I was discussing with you guys that we are having more than 7,000 plus languages, and English is the language that is the top most spoken language in the world. ठीक है. So अब इस language को अगर पूरी दुनिया में ये सबसे ज्यादा बोलने वाली language है, so how is it possible कि हमारी जिंदगी में कभी हमें जरूरत ही ना पड़े English speaking की. ठीक है. If you are entrepreneur, if you want to be a freelancer, if you want to be a writer, content writer, or whatever, you need the good communication skills. Otherwise CVs भरते जाएं आप लोग, अपनी जो है degrees लेते जाएं, this would be just a piece of paper for you if you are not just developing in your communication skills. आपको बात करनी ही नहीं आती है, how to just catch your customers and your clients. So how would you be able to successful in your life and in your career? So that is the reason I'm telling you to just enroll yourself in it. So you would learn the new standard things to communicate with your customers, to just give the presentations well, if you're in college, if you're in university or anything. All right. So here we are, students, that we have just designed this course in a very proficient way that you wouldn't be not only able to just communicate well, inshallah, you will be able to write well as well and to listen well as well. Okay, so students, we have divided our lesson into 3 categories. Number 1 is grammar, number 2 is your communication and your conversation skills, and 3rd is pronunciation and accent, okay, and vocabulary as well. So student, this is my first one, the day 1, in which we will introduce you sentence structure. Ki sentence banta kya hai, what are the components of sentences, what are the things we need to make the sentence. Okay, what are the phrases, what are the words, what are the clauses, and what are the sentences. इसमें difference क्या है और ये चीजें हम क्यों सीखते हैं अपनी language को develop करने के लिए. Then we are having common mistakes जो हम लोग पाकिस्तानी जो है वो बड़े confidence के साथ जो है वो हम लोग ये करते हैं, and we are going to tell you not only in American but in British English as well. क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका वास्ता सिर्फ American से पढ़े या सिर्फ Britisher से पढ़े. Maybe you're working in TRG, maybe you're working in call center. तो वो majority पाकिस्तान में जो call centers हैं वो American based call centers हैं. So it is very necessary for us to just know the difference between both of the languages, so you would be proficient in your communication skills. Then students, हमारी जब भी introduction होता है, किसी से बातचीत होती है, चाहे वो formal context हो या informal context हो, we are starting with the greetings, then we just introduce ourselves, and then we come to the farewell. So we are going to tell you what is the standard way to greet someone, to introduce someone, introduce yourself, and to end or to conclude your conversation with farewell words. Okay, so student, next is the tenses. Tenses क्या हैं? Verbs हैं जो दिन से लेकर रात तक हम लोग action से perform कर रहे हैं. तो without knowing about it, without that कि किस time period में हमारा जो है वो action हुआ है, we wouldn't be able to just communicate well properly in it. हमें English language को बल्कि किसी भी language में हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी grammar क्या है, कि हम ठीक grammar भी use कर रहे हैं, ठीक tense भी use कर रहे हैं अपनी बात को convey करने के लिए कि नहीं. So the first one is student present indefinite tense. Our 70% of language lies on present tense. क्योंकि हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं, तो जब हम लोग जिंदा हैं तो we talk about the present. So 70% of our language lies on present simple present tense or present indefinite tense. So we will just do that in detail. Then we will do the do and does, because that we for the negative and interrogative sentences we need that. Then I will let you know about the
form of verb that we need in the present tense. For example, base form of verb and S form of verb and present continuous tense, and that would be our second tense. Then student, in English language, we write some words. In these words, there are certain letters that when we are writing them, we write them in written, but we do not pronounce them. उनको spell नहीं किया जाता, मगर लिखा जाता है. So there is a huge list of silent letters in English language, so I would let you know about that. And we will discuss about daily routine because that will be connected to your conversation, and that will जो भी हम दिन में कर रहे हैं और daily basis पे कर रहे हैं, that will be connected to your present indefinite tense. Okay, so next class will be on tenses again, present perfect tense and present perfect continuous tense. I will let you know about the difference, present positive, present perfect negative, and present perfect interrogative sentence. So next we will just do the silent letters. As I told you, the list is very huge, so we will cover it into 3 days. And role play, I will assign you different roles. This maybe suppose I will let you know that you are a student and I'm a teacher, or maybe I'm a teacher and you are a student, I'm customer, you are some businessman, or you are waiter, I'm the customer, or I'm the waiter, or you are customer. So we will assign you different role play जो कि हम daily किसी न किसी situation में पढ़ते हैं, and in that situation, how can we able to communicate well in that? All right. So next student, that is past indefinite tense, past continuous tense, the thing that we have already done, or the thing that was in progress in the past continuous time. So we will let you know about that. Then in parts of speech, without parts of speech, हमारी जो conversation है वो complete नहीं होते, हमारे sentences complete नहीं होते. We must know which is the verb, which is noun, what are the kinds of noun, and all that. So I will start with the noun, the kinds of noun, and then we will go to the silent letters and role play again. All right. So on day 5, past perfect tense, past perfect continuous tense. In part of speech, we will do pronoun, the kinds of pronouns. Okay, it's a huge list as well. Suffixes, prefixes, and abbreviation. हमें उनकी language, क्योंकि natives बहुत speed में बोलते हैं, वो abbreviations use करते हैं अपनी language में, तो उनकी language को समझने के लिए we have to know the abbreviations, the contractions and contractions. क्योंकि वो short form क्या use कर रहे हैं, वो किसके लिए क्या abbreviation use कर रहे हैं, without knowing we wouldn't be able to communicate to them. तो ये उनका कल्चर होता है, उनके कल्चर को समझने के लिए ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी. Next is future indefinite tense, future continuous tense, parts of speech. In parts of speech, we are going to do with adjectives and prefixes. Alrighty. Next, students, we are going to do future perfect tense, future perfect continuous tense, and in parts of speech, we are going to do work on verbs. There are many kinds of verbs as well. I will let you know about the stative verbs that none of the teacher has ever told you before. And we are going to work on adverbs as well, students. So abbreviation and presentations. I will assign you the presentation because अगर आपकी involvement नहीं होगी conversation में, तो you wouldn't be able to communicate well. Definitely communication या spoken के लिए सिर्फ हमें बताना थोड़ी, आप लोगों ने conversate करना है. So you will be assigned with the presentations in your assignments, and you will be given the task in your assignment. So you would be able to get the chance to speak and to communicate well. Whether सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, we all are here to learn. So हम किसी को object नहीं करेंगे, चाहे आप सही बोलें, गलत बोलें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि हम आपको ठीक कर सकें. Alrighty. So on next day, we are going to work on the parts of speech. As we are done with till here, we would be able to complete our tenses. Now is the time for the preposition, interjection, conjunction. This is not only the part of your writing, but also of your spoken. Then contraction, as I already mentioned, you guys, contraction क्या होते हैं? Contraction short forms होती हैं. For example, they are not taught. They are sometimes when they are speaking fluently, they will not say do not. They will say don't. Okay, so there is a great list for that as well. So I will we will discuss that as well. In the discussions, you would be able to get the chance to discuss few things. So aapki jo communication skills hain enhance. So the last thing that we are going to cover, student, is declarative sentences. These are the types of sentences, in which first one is declarative sentence, interrogative sentence. This is not interrogative, okay? This is interrogative sentences, imperative sentences, exclamative sentences. ये सिर्फ राइटिंग के लिए नहीं होता, ये किसी के मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ लोगों का मिसकॉन्सेप्शन होता है कि ये सिर्फ
हमारी राइटिंग स्किल्स ही डेवलप करेंगे। नो, दिस इज द पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। और लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं, और डिटेल ये सब चीजों से ही बनती है। सो हाउ टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी स्टूडेंट, वी हैव डिजाइन फ्यू सेशंस एज वेल, जो कि इसका पार्ट नहीं है, बट वी हैव एडेड, ताकि आप लोगों को जो ठीक चीजें हैं वो पता चल सके, दैट हाउ यू वुड बी एबल टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी, how would you able to improve your pronunciation and vocabulary. So we will let you know how to write an email, how to give the proposal to your customers in a formal way. And the last thing is that we are going side by side, we are going to do the auxiliaries with the tenses, but we have another separate lesson for that as well, in which I will let you know the correct usage of do, does, did, have, has, had, is, am, are, was, were, will, shall, and the modal auxiliaries as well. So students, we are going to work on it, inshallah. So I hope that that would be a great way along with you guys to learn new things. This would be you who would be learning from me, and this would be I who would be learning from you guys as well, inshallah. So that was the presentation, students, and this is all. And now I'm having my other class as well. So, Sir Imran, are you there? जी मैडम, ये सेशन 10:15 बजे तक है आपका, 45 मिनट का ये सेशन। Yes, we have. So, all right, okay. जी अभी टाइम है स्टूडेंट्स, अभी टाइम है, अभी क्लास एंड नहीं हुई। Okay, yes, students, do you want to ask something? Then you can just ask. मैडम इनकी कोई कम्युनिकेशन आपने करवानी हो तो को होस्ट हैं आप, इनका माइक किसी का अनम्यूट करना चाहें। Already, I got it. Yes, students, do you want to share? First of all, let me just ask you, if you got any question, ask me. Students, wait, let me just unmute you. जी मैडम बताइए किसका माइक अनम्यूट करूं। Okay. And let me just add, the person is just has asked the question. Let me please add how to talk in English. तो talk in English जो आपको आपके सामने जो है वो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं तो वो लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? How do they learn language? You have experience, every one of you have experienced it. First of all, the first step is to listen it. बच्चे क्या करते हैं, पहले ही पैदा होते तो बोलने नहीं लग जाते. So how do they start communication? After some time, after maybe that is the period of 2.5 years, ठीक है, 2 साल के बाद ही वो प्रॉपर बोलना शुरू करते हैं, 2.5 साल के बाद. So the first phase is to listen a lot. Listen and listen a lot, and then you would be able to communicate well in English. तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, हर इंसान के अंदर होता है. जिससे आप अपनी फर्स्ट नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं, इसी तरह आप सेकेंड लैंग्वेज भी सीखते हैं. तो फर्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जितना सुनेंगे उतना आपकी जो है वो स्पीकिंग स्किल्स जो है वो नेचुरली डेवलप होंगी. ओके. Second student is asking, please share your contact details. When student you would be added in our ये इमरान भाई आप बताइएगा कि इनको जो हम लोग ऐड करेंगे अपने ग्रुप्स में, जी तो इनका जो है वो हमारी सारी डिटेल्स जो है वो कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी. इज दैट ट्रू? इसी तरह होता है? बिल्कुल ऐसे ही. ऑलरेडी आपको प्रॉपर सपोर्ट दी जाती है. ये 1.5 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है. ये 12 से 14 लेक्चर्स हैं जो कि लाइव ऑनलाइन जूम पर हैं. आपको प्रॉपर टास्क असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, क्यूए सेशंस होते हैं, फिर सर्टिफिकेशन भी है इसमें. फिर आपकी असाइनमेंट्स को फेसबुक ग्रुप में 1 by 1 चेक किया जाता है. डेली बेसिस पर आपकी चैट ओपन की जाती है जहाँ पर कन्वर्सेशन करवाई जाती है. तो मैडम मैं माइक अनम्यूट करूंगा मिस अरवा अब्बासी का, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं. ऑलराइट. जी मिस अरवा अब्बासी, आपका माइक अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा. अनम्यूट का ऑप्शन आएगा ताकि आप मुझसे बात कर सकें. ओवर टू यू. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम अरवा, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम. मैम आई वांट टू स्पीक लाइक यू. जैसे आप फ्लुएंटली बोल रही हैं ना, तो मैं भी ऐसे बोलना चाहती हूँ. क्या मैं इस कोर्स के लिए ऐसे बोल सकती हूँ? Let me tell you, visual Arwa, pronunciation. let me tell you very clearly, Arwa, that ये हमारा जो है 1.5 हमारे 1.5 महीने का जो है ये कोर्स है, ठीक है. देयर वुड बी नो इंजेक्शन कि हम आपको इंजेक्शन लगाएंगे और आपको जो है वो पूरी जो है वो वोकैबुलरी आ जाएगी और पूरी जो है वो आपको जो है वो एकदम से फ्लुएंटली आपको बोलना आ जाएगा. देयर वुड बी practice. The more you will practice on it, the more you would be able to proficient in your language skills. कैसे करते हैं कि आप लोगों को जो है वो एक डिटेल दी जाएगी, आप लोगों को जो है वो टिप्स और ट्रिक्स दी जाएंगी और आप लोगों को जो है we will let you
we will just train you how to adopt the formal way, standard ways to speak in English. ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि मैंने सोचना कैसे इंग्लिश में. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं सारे, पहले हम लोग उर्दू में कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने सेंटेंसेस. इज दैट ट्रू? ऐसे ही होता है. ओके मैम. ऐसे ही होता है ना. आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन. ऐसे ही होता है कि पहले हम जब इंग्लिश में बोल रहे हैं तो पहले हम लोग अपने दिमाग में जो है वो उर्दू में सेंटेंस बनाते हैं और फिर उस उर्दू में यस मैम. ऐसे ही है ना. फिर हम क्या करते हैं, वी आर यस जस्ट टेलिंग आवर बिल्कुल माइंड. ऐसा ही है. हाँ, फिर हम अपने माइंड को बताते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन करो. ठीक है, इसका वर्ड का मतलब क्या है, इसके वर्ड का मतलब क्या है, इसके वर्ड का मतलब क्या है, और वो हमारी फ्लुएंसी खराब करती है. ये चीज हमारी फ्लुएंसी खराब करती है कि हम लोग पहले सोच ही इंग्लिश में रहे. सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं कि हम इंग्लिश में उर्दू में सोच के इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं. सेकेंडली, हम ट्रांसलेशन के वर्ड्स ढूंढने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस, इट विल टेक टाइम. योर माइंड इज इन द प्रोसेस. तो जब वो आप उस प्रोसेस में हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, उस ना आपके बेचारे माइंड की गलती है. ये क्या हो रहा है कि हमें सिखाया ही इस तरीके से गया है कि आप लोगों ने इंग्लिश में उर्दू की ट्रांसलेशन करनी है, उर्दू में इंग्लिश की ट्रांसलेशन करनी है, तो हम इस चीज में स्टक हो जाते हैं. एंड लेट मी टेल यू Urva that this is not only Pakistanis who are facing this. Throughout the world, अगर कोई चाइनीज सीख रहा है, अगर कोई जापानीज सीख रहा है, अगर कोई मलय सीख रहा है, तो उन सब के साथ भी यही हो रहा होता है कि उनको जो है. मैडम अगले सवाल की तरफ चलते हैं. ऑलराइट जी, अब हमारे पास हैं जी, आप किसी ने बात करनी है मुझसे, अपनी हेजिटेशन को दूर करना है तो जरूर लाइक 1 2 3 मिनट हैं आपके पास, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगा. मिस हफ्जा, अच्छा, आई वांट टू टॉक विद मिस गुल. ठीक जी मैडम, मैं आई डोंट नो क्या मैडम हैं या सर हैं, गुल मोहम्मद नाम, आई डोंट नो आपका प्रॉपर नाम क्या है. Hello, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Is this Gul with us? Yes, ma'am. Okay, Gul, how are you? Well, I'm fine, miss. How are you? That's good. I'm good. Thank you for asking. Yes, Gul, what's your question? Miss, I have one question that, miss, please add types of parts of speech in your lectures. Parts of speech? आपने late join किया है? I guess I told that we have all the parts of speech here. Even I have added articles in it as well. So हम आपको complete parts of speech बताएंगे इंशाल्लाह. Miss, parts of speech types. Noun types mean pronoun types individually. Student, I told you. Yeah, definitely. If we are doing noun, we will let you know about the types of noun as well. If you are just working on pronoun, I will let you know about the types of pronoun, the kinds of pronoun. If we are doing adjectives, we are going to work on all the degrees of adjectives. So उसमें आपने और क्या हमने खाली definition बतानी है. We will let you know all the kinds as well. जी मैडम Definitely. मुनीबा, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है. मैडम मुनीबा, आप अपना माइक शट कीजिए और बाकी लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर सकते. Yes, student. And miss, Anything else? Yes, ma'am. Yes, student. What do you need to ask? I can speak English a bit more well, but I can speak English in front of people. Why? I become more hesitant. Because yes, you are hesitant because you are not used to of it. You have to just make yourself used to of it, and we will let you know the things, the tips and the tricks that will make you fluent in it, and you will be used to just you can make yourself fluent in front of anybody. Okay, वो आपका जो माइंड एकदम से स्टक हो जाता है ना, उसकी एक प्रैक्टिस होती है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है. सो इंशाल्लाह व्हेन आई विल बी गिविंग यू द सेशंस, ऑन दैट टाइम आई विल लेट यू नो कि अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है किसी के सामने बोलते हुए. दिस इज वी आर हैविंग लाइक एक स्टैंडर्ड, जब लैंग्वेज पढ़ाई जा रही होती है तो उसमें आप लोगों को सारे ट्रिक्स और टिप्स बताए जाते हैं कि अपने आप को कैसे ट्रेन करना है. मैंने उजैर आपका माइक अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए. उजैर चौहान. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Uzair. How are you? Fine, ma'am. I want to know about how to improve our vocabulary. Vocabulary. Okay. Yes, Yes, ma'am. student. Okay, let me tell you, student, that हमारे पास वही बात अगेन आती है कि मैं एक सेशन होगा हमारा जिसमें मैं आपको आपकी प्रोनाउंसिएशन और vocabulary कैसे एनहेंस करनी है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. All right. Okay, ma'am. For example, there are
methodologies, कुछ methodologies हैं, there are more than 15 methodologies that I would share with you, और वो अगर उनमें से अगर आप अपनी लाइफ में 5 ही अपना लेते हैं, then you would be able to very proficient in the language skill, in your improving your vocabulary, inshallah. Okay, जी, thanks. शाहज़ेब जी, थैंक यू सो मच ज़ैर। ये एटलीस्ट चलें, ये कॉन्फिडेंस तो है ना लोगों में, अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड हैबिट। Yeah, जी this batch शाहज़ेब seems जी very जी energetic. जी शाहज़ेब आप हमारे साथ प्रेजेंट हैं। Walaikum assalam, Shahzeeb, how are you? Walaikum I'm fine. assalam. What's about you? I'm doing great. Thank you so much for asking. Yes, student, what my you want to question is, ask? can you just suggest us some short novels that enhance our vocabulary and connect What with should I suggest sentences you? and their words? Your voice is breaking. Can you tell me again? Some short novel that Novel. make us some The sentence and readers. vocabulary, enhance our vocabulary and Yes, the novels and the readers are Yes. very good to improve ma'am. your vocabulary. मगर जिस तरह से हम vocabulary पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं ना novel, उस तरह नहीं पढ़ना आपने। आपने क्या करना है that you have to just कोई भी एक reader ले लें, एक novel ले लें अपनी life में, कोई एक ही लेना, and that would be enough if you are doing that once in your lifetime, whole life. आप एक reader ले लें, उसका daily एक paragraph जो है वो आपने लेना है, ठीक है? And you have to just find out the difficult words in it that are difficult for you. Underline these words, just make a separate list for them, find the meaning of them, find the pronunciation of them and the sentences on your internet. ठीक है, सिर्फ एक पैराग्राफ से आपने ज्यादा नहीं करना, और उसको आपने अच्छी तरीके से you have to just memorize it. Memorize these all words. You can mute yourself because there is distortion in your at the back. सही नतीजा, आपका माइक ओपन किए, आस्क द क्वेश्चन। Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Yes, Khadija, how are you? I am fine. I am good. Thank you. मैम मुझे पूछना था कि मेरी इंग्लिश काफी वीक है। समटाइम जब आप फ्लुएंट में बोलती हैं तो या कोई भी बात करता है तो मुझे वैसे समझ आ जाती है, लेकिन जब वो फ्लुएंट में मुझे समझ में नहीं आता। फ्लुएंसी नहीं है। This is the same thing I already mentioned, student, कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी को समझ तो सकते हैं मगर हम बोल नहीं सकते। So I told you that inshallah from the very start, from the beginning level till the advanced level, you would be able to know each and everything. What are the tips, what are the tricks, what are the methodologies that will not only improve your communication skill, that will improve your fluency, that will improve inshallah your writing skills as स्टूडेंट्स, well. हम सवाल जवाब लेंगे आपकी चैट पे। जो लोग माइक पे नहीं आ पा रहे तो अब मजीद हम माइक नहीं ओपन करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट है। इससे पहले कि हम इस क्लास को एंड करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अटेंडेंस, हाजिरी जरूर लगाइएगा। और हाजिरी लगाने का आपको एक बेनिफिट तो ये होगा कि आपको मिस आयशा की अगली क्लास की एक्सेस मिल जाएगी, आपको मैडम के व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट होगी जहां पर मिस खुद होंगी, आपके सवालों के जवाब, आपको टास्क असाइनमेंट्स, आपको सपोर्ट, आपको लाइव क्लासेस, आपको रिकॉर्डिंग एंड सर्टिफिकेशन के लिए। तो लाजमी अटेंडेंस लगाइएगा। अगर ये आपने हाजिरी लगाना मिस कर दी तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको नहीं बैठा पाएंगे अगले सेशन में। अच्छा जी, मेरे पहला सवाल है, 1.5 महीने में क्या इंग्लिश क्लियर हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 1। ये स्टूडेंट एक नॉर्मल एक नेचुरल चीज है कि हम लोगों को कितना टाइम लगता है, एक बच्चे को कितना लैंग्वेज टाइम कितना लगता है सीखने में। ही और शी नीड्स 2 years और 2.5 years। मगर क्योंकि हम लोग अडल्ट हैं, हम ग्रोन अप्स हैं, तो हम लोग जो है वो लैंग्वेज को समझ के जो है वो इस चीज को तेजी से कर सकते हैं। बट इन 1.5 month I will just let you know about the tips, tricks and the things, and I will teach you the way how to just use your language in a proper way. Tell me ma'am how I can improve my book। मैं कुछ सवाल मैडम 3-4 पढ़ लेता हूँ, आप फिर एक साथ उसका आंसर कर दीजिए। एक बच्चा पूछ रहा है कि वोकैबुलरी कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। This is repeated क्वेश्चन as है well. कि इसमें आ रहा है जी, अच्छा, Okay. what can we do with pronunciation because we are born with Pakistani accent, so is there Yes. any shortcut to improve it? Yes, pronunciation, the more you will listen the natives, the more you would be able to improve your pronunciation, क्योंकि उनकी pronunciation सीखने के लिए उन्हीं को सुनना पड़ेगा आपको। So this is the, इसकी बहुत डिटेल है, बहुत सी methodologies हैं, बहुत सी टिप्स हैं, मगर उनमें से मैं आपको एक बता रही हूँ कि इसके लिए जो आपको natives को सुनना पड़ेंगे। अब कहाँ से natives को ढूंढने और कौन से natives आपसे बात करेंगे, I will let you know in the class. वेबकैम अपना ओपन कर ले, मैंने पैनलिस्ट आपको मैं लूंगी क्योंकि अब सवाल जवाब का सेशन है तो उसके लिए जरा बच्चों के लिए आसानी होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, सवाल हम अगला आपसे ले रहे हैं।
सवाल है जी, आई एम वॉचिंग ड्रामास टू इम्प्रूव माई इंग्लिश बट स्टिल आई एम स्टक। You're stuck. Okay, do one thing that when you are just watching them, just enjoyment के लिए नहीं आपने उसको करना, आपने जो है वो उसको learning के लिए करना है. Okay, just keep active your mind during that time, and along with that you have to just read the subtitles with that. एक तो उनको सुने, your ears are listening to them, read the subtitles as well, क्योंकि ये आपका जो है connection बन जाएगा आपके mouth का, आपकी tongue का with your brain. So you are training not only your tongue but also your brain as well, क्योंकि अगर आपने कहीं भी अपनी pronunciation गलत पढ़ी है तो you would be able to just match with the native. So this will be the comparison apple to apple. मैडम आयशा, अगला सवाल है इसमें कि कोई नॉवल बता दें, कोई इंग्लिश मूवी बता दें जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। There are a lot of movies. आप कोई सी भी मूवी देख लें, कोई स्पेसिफिक थोड़ी है कि किसी एक भी इंग्लिश मूवी से आप सीख सकते हैं. There would be any movie, that would be any season, English season, whether it is American, whether it is any UK or based or any. So you can just read. बड़ा जबरदस्त सवाल आया ये, मेरे भी माइंड में सवाल था जब मैंने इंग्लिश बोलने के लिए किसी कोर्स में एक दफा एनरोल किया था और मैं आज तक नहीं सीख पाया. अब आपसे सीखने का मौका मिला और टाइम मिला जरूर सीखेंगे. सवाल ये है कि मिस मेहर ने जब सवाल किया कि मुझे लगता है कि मैं जो बोलूंगा वो कहीं गलत ना हो. So that's the confidence problem. Actually, the thing is that when you are starting speaking English, हमें सबसे ज्यादा मसला ही hesitation का होता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं मेरा accent गलत ना, कहीं मेरा pronunciation गलत ना हो जाए. So we have to just break the fear of English language. जैसे हमारे यहाँ पे आते हैं, for example, if I belong to कोयटा, ठीक है, मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ, तो जब मैं पश्तो लैंग्वेज मैंने सीखी या मैंने बलोची लैंग्वेज सीखी तो मुझे किसी ने ग्रामर तो नहीं बताई थी, मुझे किसी ने प्रोनाउंसिएशन तो नहीं सिखाई थी, मैंने तो सिर्फ उनको सुना था. So when I was listening them, naturally I just developed this thing. तो आप लोगों को ये fear तोड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप लोगों को जो है वो अपने आप से communicate start करना है. Whatever you are doing, start communicating to your own self. तो ये आपके अंदर ये नेचुरली जो है वो डेवलप हो जाएगा अपने आप से. जो भी करें, पैसे कमा सकते हैं क्या, ये अर्निंग कर सकते हैं इंग्लिश बोल के? क्योंकि इंग्लिश बोल के जहां तक मुझे याद है कि ये तो सिर्फ बंदा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है या अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर सकता है, क्या अर्निंग भी हो सकती है क्या? ये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसे? जी, लेट मी टेल यू, एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि आजकल जॉब्स हमें कहाँ मिल रही हैं. आप ये बताइए कि हमें कहाँ जॉब्स मिल रही हैं. मेजॉरिटी हमारे जैसे भी पास आउट होते हैं स्टूडेंट्स, वो इंटरनेट का रुख कर रहे हैं, ठीक है. तो इंटरनेट पे जब आप आते हैं, इफ यू आर वर्किंग ऑन फ्रीलांसर, इफ यू आर वर्किंग ऑन फाइवर, इफ यू आर वर्किंग ऑन अपवर्क, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या सिर्फ पाकिस्तानी मिलते हैं? आपके क्लाइंट्स, आप ये नहीं चाहते कि आपके जो है वो क्लाइंट्स इस रीजन से बाहर के आपको मिले. सो फॉर दैट केस, इन दैट केस आपको क्या डेवलप करनी पड़ेगी? अपनी लैंग्वेज स्किल्स, वो भी इंग्लिश, क्योंकि वो तो आपकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर सकते. तो वो आपकी स्किल्स, आप अपनी स्किल्स कैसे बेचेंगे उनको? वन थिंग, इफ यू वांट टू बी अ टीचर, if you want to get any kind of job, if you want to be a content writer, if you want to work on YouTube. आपको मालूम है हिशाम सर्वर के बारे में तो आपने सबने सुना होगा. स्टार्ट में वो क्या कर रहे थे, सिर्फ उर्दू में अपनी जो जितनी भी स्किल्स थी उनकी, वो उर्दू में जो है वो अपनी जो है यूट्यूब पे चढ़ा देते थे. विद द पैसेज ऑफ टाइम ही रियलाइज कि मुझे जो है यूट्यूब कम पैसे क्यों दे रहा है. वो सिर्फ उनका एक ही जरिया है ना कमाने का, कि वो आप व्यूज देते हैं उनको और वो उधर से ही कमा रहे हैं. सो what is the how he was thinking कि मुझे ये कम पैसे क्यों मिल रहे हैं. तो he realized this thing कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो हैं सारे पाकिस्तानी जिनको उर्दू समझ आती है. तो बाउंड्रीज बहुत लिमिटेड हैं. इंग्लिश में अगर कंटेंट मेरा जा रहा होता तो ये वर्ल्ड वाइड देखा जाता. नाउ व्हाट इज ही डूइंग, दैट ही इज जस्ट रीमेकिंग हिज ऑल वीडियोस, किस तरह से इंग्लिश में डब करके अब वो रीमेक कर रहे हैं और अपनी सारे जो है वो कंटेंट जो है अब वो इंग्लिश में ट्रांसफर कर रहे हैं. सो नॉट ओनली ही इज एबल टू जस्ट कम्युनिकेट हिज थिंग्स इन इंग्लिश, ताकि उनके जो व्यूअर्स हैं वो जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी ना हो, वर्ल्ड वाइड भी हो सके. जी मैडम, थैंक यू सो मच मिस आयशा कुरैशी, जज़ाकल्लाह खैर. स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको मिस की क्लास अटेंड करके? मैडम का नॉलेज, मैडम के स्किल्स, मैडम का कॉन्फिडेंस, मैडम का एक्सेंट, मैडम की प्रोनाउंसिएशन, मैडम का एक आपके साथ द वे ऑफ डीलिंग अंडरस्टैंडेबल था. कुछ समझ आया कि नहीं? ऑफ कोर्स आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो नो प्रॉब्लम. आज आपका लेक्चर नंबर 1 था, तो अगर कुछ नहीं भी समझ आया, नो नीड टू वरी. लेक्चर नंबर 2 में मजीद चीजें आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होंगी. फिर लेक्चर नंबर 3 जब आएगा
फिर उसमें मजीद चीजें अंडरस्टैंडेबल होंगी। इस कोर्स की फीस क्या है, इस कोर्स की ये 1 वीक का आपको भी फ्री कोर्स दिया जा रहा है, उसके बाद भी शायद आपको ये फ्री कोर्स मिल जाए। अब कोर्स की फीस क्या है, कोर्स पेड है या फ्री है, इस बात को हम आने वाले लेक्चर्स में आखिर में शायद डिस्कस करें। अभी के लिए तमाम तर सेशंस आपके लिए फ्री हैं, तमाम तर लेक्चर्स फ्री हैं। लेक्चर नंबर 2 अगर आपने अटेंड करना है तो प्लीज हाजिरी जरूर लगा दीजिए। व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन को प्राइवेट में मैसेज करके यस प्रेजेंट जरूर लिख दें। और आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है, इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेशन स्टार्ट है। मिस हुमा अबू बकर लाइव हैं। अगर आपने मिस आयशा का सेशन लिया है तो एक दफा मिस हुमा का सेशन भी जरूर लीजिए। आपको बहुत कुछ मैडम से सीखने को मिलेगा। आप कैसे एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट की मदद से डाटा एंट्री कर कर पैसे कमा सकते हैं, आप कैसे प्रेजेंटेशंस बना के पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप वर्ड में ड्राफ्टिंग करके पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप एक्सेल को इस्तेमाल करके फॉर्मेट्स बना के टेम्पलेट्स बनाकर पैसे कमा सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ये एमएस ऑफिस का सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए, इसमें भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की क्लास में। सेशन का लिंक आप सबको मिल चुका है, हाजिरी जरूर लगाइए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान। अल्लाह हाफ़िज़।